अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल सेफ़ होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कंतास के सीईओ के बारे में कि उन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में क्या कहा है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीनेशन प्रोग्रेस की। और थर्ड पर बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन और लॉकडाउन्स की डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। और लास्ट पर बात करेंगे रिसेंट जो न्यूजीलैंड में लॉकडाउन और जो केसेस आए हैं उन पर बात करेंगे। तो गाइज़, वीडियो को पूरा देखना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन कंतास के बारे में कि जिसने अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए वैक्सीनेशन को कंपलसरी कर दिया है। फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग कैबिन क्रू, पायलट, एयरपोर्ट वर्कर्स विल नीड टू बी फुली वैक्सीनेटेड बाय 15 नवंबर 2021 एंड द रिमाइंडर एम्प्लॉयज़ बाय 31 मार्च 2022, द एयरलाइन सेड इन द स्टेटमेंट। तो गाइज़, इसके लिए 1 मिनट की वीडियो है जिसमें डिटेल से इस न्यूज़ को बताया गया है, तो आप प्लीज़ उसको देखें। Get a jab or lose your job. That's the choice Qantas workers will be given as the airline unveils a new rule to protect staff and passengers from COVID-19. While some say it's not the right way to encourage vaccination, the Prime Minister has praised the flying kangaroo. Get on board or take a walk. That's the message to 22,000 Qantas employees. All frontline staff, cabin crew, pilots and aviation workers, airport workers will need to be fully vaccinated by the 15th of November this year. Others have until March next year, and if workers decide not to get vaccinated, They are deciding, I think, that aviation isn't the area for them. although there will be exemptions for those with a documented medical reason. The airline introduced the new rule after surveying 12,000 employees. Nearly 75% of our employees believe that vaccination should be required for all employees. While the Prime Minister welcomed the approach, They've come up, I think, with a fair and well-intentioned direction. unions say the flying kangaroo has jumped the gun. Once you mandate at a company level, you provide a lightning rod for discontent. Theo worked for Qantas for 7 years. He's fully vaccinated but says some workers need more help to get there. To deal with the barriers, whether that is lack of education, whether it's language barrier. Qantas is the second major Australian company to make COVID-19 jabs mandatory for staff, just weeks after SPC announced the rule for its workforce. But with the rollout now reaching a pace of 200 jabs a minute, it's hoped most Australians will roll their sleeves up voluntarily. Fiona Willan, 9 News. तो नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीनेशन प्रोग्रेस की। तो पास्ट 24 आवर्स के अंदर ऑलमोस्ट 2,73,000 पीपल को उनकी फ़र्स्ट डोज प्रोवाइड की गई है। तो इस ग्राफ में रेड लाइन शो कर रही है कि ऑस्ट्रेलिया में अभी तक कितने % पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेट हो चुकी है, और वैक्सीनेशन के जो थ्रेशोल्ड जो टारगेट्स हैं उनको भी यहाँ पर शो किया गया है, 70% और 80%, जो कि फ़ेज़ बी और फ़ेज़ सी हैं। और उम्मीद यही है कि एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम जो है वो यही है, 70% पॉपुलेशन 7 नवंबर तक और 80% 25 नवंबर 2021 तक फुली वैक्सीनेट हो जाएगी पॉपुलेशन। तो नेक्स्ट बात करते हैं कोविड केसेस की। तो NSW के अंदर पास्ट 24 आवर्स के अंदर 633 न्यू केस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि पर डे के लिहाज से जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है अब तक के वर्स्ट केसेस हैं, और 3 डेथ्स रिकॉर्ड हुई हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर आपसे एक वीडियो शेयर करते हैं जिस पर एक न्यूज़ रिपोर्टर ने वहाँ की प्रीमियर ग्लैडिस से पूछा है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो आप स्टेज 4 का रिस्ट्रिक्शन या लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रही। तो उन्होंने क्या कहा है, आइए देखते हैं। What's it going to take here? Is it going to take 1,000 cases a day, 1,200 cases a day before you institute a proper stage 4 lockdown? This lockdown is not as hard as in New Zealand, as in Melbourne. It's clear there's this gap before the vaccination. How many cases a day is it going to take? Look, we rely on the advice of our health experts. We know that our lockdown is extremely harsh and extremely strict. And we appreciate the pressure that so many families are on because of the lockdown. The vast majority of people are doing the right thing. But what concerns what are the us... health officials Can you just saying? let me finish the answer, please? But what concerns us is, as Deputy Commissioner Warboys just reported, police found at least 400 examples in one day of people leaving their home when they shouldn't be. In one day alone, police found 400.
And what worries us is for every person we find doing the wrong thing, there could be somebody else doing the wrong thing. There's 8 million people in this state. Of course 400 people are going to be doing the wrong thing. You have to have the right health orders and the right lockdown in place. We have had and continue to have the right settings in place, but unfortunately too many people continue to do the wrong thing. So the settings are right, aren't they? Excuse me, it's not your press conference. There's a lot of other journalists here as well. Can I just say this point? That we know the settings we have in place are some of the harshest that Australia has ever seen. But not the harshest. However, we also know that unfortunately it only takes a small number of people to do the wrong thing to cause this amount of spread. That's why I'm urging everybody, stay home. Don't leave home unless you absolutely have to. And I'm also saying to people, we know that there is the light at the end of the tunnel. We know we'll get through this, but it will take us much longer than we need to if people keep doing the wrong thing. तो नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की कि जहाँ पर जो है 22 न्यू केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसके बाद टोटल केसेस अब तक 67 हो चुके हैं। इसके बाद क्वींसलैंड की बात करते हैं कि जहाँ पर पास्ट 24 आवर्स के अंदर कोई भी न्यू लोकल केस रिपोर्ट नहीं हुआ। क्वींसलैंड फ्राइडे से रिस्ट्रिक्शंस में नरमी करेगा, लेकिन मास्क इंडोर भी 1 मोर वीक के लिए रिक्वायर होंगे। तो लास्ट पर बात करते हैं न्यूजीलैंड की कि जहाँ पर ऑकलैंड में एक केस रिपोर्ट होने के बाद वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डर्न ने पूरे न्यूजीलैंड के अंदर 3 दिन का लॉकडाउन लगाया और उन्होंने कहा है कि ये सिडनी डेल्टा वेरिएंट के साथ लिंक्ड है। The new case has triggered alert level 4, the highest pandemic alert level across the country, which means a stringent stay-at-home order is put in place, which all physical contact being limited to household members. तो गाइज़ ये थे आज के बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड इस तरह के अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।